Very good morning, students. We are again with our composition section in 12th class. You know that very well. In our last classes, we have covered 3 questions of notices, and right now we are having the question number 4 in the same series of section. The question number 4 speaks about, let's do the question as fast as we can. Question number 4 is, check it out. The question number 4 is, the music club, the question number 4, the music club of your school is going to organize an inter-class singing competition. I repeat the question for all of you. The music club of your school is going to organize an inter-class singing competition for junior classes. कि आपके स्कूल का जो म्यूज़िक क्लब है वो एक इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, एक क्लासेस के बीच में सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. वो द म्यूज़िक क्लब फॉर जूनियर स्टूडेंट्स, टू वूम फॉर जूनियर क्लासेस, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ म्यूज़िक क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते, सो बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक क्लब, ड्राफ्ट इन नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए, नोटिस तैयार कीजिए इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड्स में, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इट, विद्यार्थियों को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए. इट मीन्स दैट द म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन for the junior classes or for the junior students. You need to draft a notice in about 50 words to informing the students about it. Okay, just to inform the students about the same competition. Okay, with the help of notice. So competition is singing competition for junior classes. In the first line, you have to mention the name of institution or school. In the first line, just mention the name of school or institution. If it is not given in the question, you can mention the name of school as I suggested you before, as per your own way. In the line number 2, just mention the date. In line number 2, mention the date. In line number 3, just write down notice because the question is about notice. Line number 3 और line number 4 में आपको जो है event या competition का नाम लिखना है. For example, the question is about cultural activity, then mention Republic Day celebration, Independence Day celebration, Gandhi Jayanti celebration, या फिर names for cultural activity. Okay? As you know that the competition basically is of singing competition. So that's why I have mentioned voice of DPS, because DPS stand for Delhi Public School and voice of DPS का मतलब DPS की आवाज़. Or for example, lots of channels are going on in television also, like Voice of India, okay, like that. तो voice of DPS है DPS की आवाज़ एक singing के point of view से. Okay, so let's see the answer. As I told you that the first line you can remain the same of notices in passive voice or in active one too. All the students are hereby informed that, कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है that the music club of our school, कि हमारे स्कूल का जो म्यूजिक क्लब है announces, घोषित करता है, और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है. A given example is in passive voice, और hereby mean to say hereby, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस नोटिस के द्वारा. Is it clear? All the students are hereby, इसके द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है that the music club of our school, हमारे स्कूल का जो म्यूजिक क्लब है announces, घोषित करता है. The music club announces, घोषित करता है voice of DPS. क्या घोषित करता है? voice of DPS को. That is basically it's an inter-class singing competition. ये क्या है? inter-class singing competition है. All the students are hereby informed that the music club of our school, the music club of our school announces voice of DPS. Voice of DPS वो क्या है हमारा? An inter-class singing competition for junior classes. Junior classes के लिए inter-class singing competition है. कब होगा? On August 2020 cross या 2020 मेंशन करना as per this session. There is no problem. In our school auditorium, हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में, हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में, the theme of the competition is patriotic and devotion. The theme of the competition is patriotic and devotion. The theme of the competition is patriotic and devotional. कि competition की जो theme है वो patriotic है और devotional है. It means that the songs will be based on
patriotism, और the song will be based on devotion. Devotional मीन टू से भक्ति संगीत वगैरह और देशभक्ति गाने जो होंगे इस तरह गाने गाए जाएंगे. इसकी थीम है मतलब कंपटीशन की जो विषय वस्तु है, जो सेंट्रल आइडिया है, इज बेसिकली डिवोशनल एंड पेट्रियोटिक. ओके, द सॉन्ग विल बी प्योरली डिवोशनल एंड पेट्रियोटिक, देशभक्ति पर आधारित, पेट्रियोटिक एंड डिवोशनल मीन्स भक्ति संगीत होंगे. इसके अलावा बॉलीवुड या हॉलीवुड के सॉन्ग नहीं चलेंगे. तो जो कंपटीशन की थीम है, जो विषय वस्तु है, सेंट्रल आइडिया है, इज वो है पेट्रियोटिक एंड डिवोशनल सॉन्ग्स. ओके, अट्रैक्टिव प्राइजेस विल बी गिवन टू द विनर्स. विनर्स को जो अट्रैक्टिव प्राइज दिए जाएंगे. अट्रैक्टिव प्राइजेस विल बी गिवन टू द विनर्स. विनर्स को जो है अट्रैक्टिव प्राइजेस दिए जाएंगे. जो विजेता हैं उन्हें जो है आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे. द ऑडिशन फॉर द स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग का मतलब होता है छटनी करना. ऑडिशन मीन्स जो ऑडिशन लेते हैं बच्चों को कम करने के लिए, स्टूडेंट्स को कम करने के लिए. अदरवाइज द स्ट्रेंथ एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी सो लार्ज. सो टू जस्ट डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स देयर विल बी ऑडिशन. द ऑडिशन फॉर द स्क्रीनिंग विल बी हेल्ड ऑन August 13, 2020 या 20 क्रॉस. इस कॉम्पिटिशन के लिए पहले से एक ऑडिशन लेंगे. उस ऑडिशन का मकसद क्या होगा? स्क्रीन करना. ओके, द ऑडिशन फॉर द स्क्रीनिंग, कि स्क्रीनिंग के लिए जो ऑडिशन होगा वो 13 अगस्त को होगा, ताकि वही स्टूडेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें जो इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए क्वालिफाई करते हैं. ओके, फॉर फर्दर डोंट मेंशन फर्दर अगेन, यू हैव टू रिमूव द फर्स्ट वन because I have mentioned further 2 times. Just further. For further details, you may contact to the president of music club during lunch hour. और further details के लिए, आगे की information के लिए आप जो हमारे president से संपर्क कर सकते हैं lunch hour के दौरान. और लिखने वाले कौन है यहाँ पे? रिया सिंह, president है music club के. Okay, as it is mentioned in question, very well. I have mentioned 2 cross here. For example, the first one is here. Okay, leave a one line space. Line number first will be of your name of school. Line number second date. Line number third notice. Line number 4 voice of DPS. And just after voice of DPS or title, you have to leave a one line space. आपको वन लाइन स्पेस यहाँ पे छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है. यहाँ एरो लगाया मैंने, देखो यहाँ पे लीव अ वन लाइन स्पेस, एक लाइन का स्पेस आपको लीव करना है, छोड़ना है. And there is again an arrow here. So before mentioning the name of a person who is in charge of any organization or any body, तो वहाँ पे भी एक लाइन आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना है. So leave a one line space. आपको वन लाइन स्पेस यहाँ पे भी छोड़ना है. Okay? So one line space just after title and one line space before your name of person who is in charge of any body or any departments, we can say that. Okay? It's all about your music club, singing competition in DPS only school. Okay? That's it. Let's have the next question. So students, let's have your question number 5 in notice. Question number 5 is, you are Rohan Riya, a student of 12th class. कि आप जो है रोहन और रिया हैं, आपका नाम जो है रोहन हो सकता है या फिर आपका नाम जो है रिया हो सकता है. You are Rohan and Riya, a student of 12th class. Exactly, you are a student of 12th class. You have lost your notes of chemistry lectures. कि आपके केमिस्ट्री लेक्चर्स के नोट्स जो हैं आपसे खो गए हैं. You have lost. Okay, present perfect tense. You have lost your notes of chemistry lectures. केमिस्ट्री लेक्चर्स के आपके नोट्स जो हैं खो गए हैं. Somewhere in your school, कहीं आपके स्कूल में ड्राफ्ट इन नोटिस, आपको नोटिस जो है ड्राफ्ट करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इट. लगभग 50 वर्ड्स में स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए. सो द एक्चुअली इशू इज दैट you have lost your notes of chemistry lectures somewhere in your school campus or your school. So need to actually draft a notice in about 50 words informing the students about the same issue. Okay, just draft a notice. Just mention the name of your school first, to which you belong basically. If it is mentioned in the question, just mention the same name here. If it is not, then you can mention your name of school or as per your own way. The first line will be the name of school. Line number second, date like December 21st, 20 cross I am mentioned here. Then line number third, notice. Line number 4 is the name of title. Okay, title I have lost. Okay, or instead of lost, you can also mention like chemistry notes misplaced. Notes misplaced.
You can use this line too, but in capital letters. But in capital letter, chemistry notes misplaced. Okay, chemistry notes misplaced instead of lost. Okay, but actually these kind of cases are counted in lost, property loss. So just mention loss. Okay, small one, lost, LOST, lost. It is informed. It is informed. या यह इन्फॉर्म किया जाता है. इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, कि सभी विद्यार्थियों को यह इन्फॉर्म किया जाता है. इट इज़ इन्फॉर्म्ड. द गिवन एग्जांपल सेंटेंस इन पैसिव वॉइस अगेन. इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है दैट आई हैव लॉस्ट माई नोट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर्स, कि मेरे केमिस्ट्री लेक्चर्स के नोट्स खो गए. आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिए हैं. आई हैव जानबूझ के नहीं खो गए हैं. आई हैव लॉस्ट माई नोट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर्स समवेयर इन आवर स्कूल कैंपस, कि कहीं हमारे स्कूल के कैंपस में जो नोट्स हैं मेरे वो खो गए हैं या फिर मिसप्लेस्ड हो गए. यू कैन यूज़ द लाइन मिसप्लेस्ड टू whether it is given in question or not. Okay, you can use the word misplaced easily. Okay, so it is informed to all the students that I have lost my notes of chemistry lectures somewhere in our school. कहीं स्कूल में जो है खो गए हैं on December 2020 cross इस डेट को, इस तारीख को मुझसे कहीं खो गए हैं. Still the action of past tense has an impact on your present time, so that's why I have used present perfect tense. So actually you lost your notes to chemistry lectures on 20th of December, but you're writing a notice on December 21st, but still the property loss has an impact on your present time. That's why I have mentioned present perfect tense have lost. Basically that's the definition and meaning of present perfect tense. Okay, so they were kept in printed folder. They were कैप्ट इन प्रिंटेड फोल्डर. वो जो नोट्स हैं मेरे वो प्रिंटेड फोल्डर में कैप्ट रखे हुए थे. ओके, जो नोट्स हैं मेरे प्रिंटेड फोल्डर में कैप्ट थे. दे वर कैप्ट इन प्रिंटेड फोल्डर. दे आर सो प्रीशियस फॉर मी. दे आर सो प्रीशियस फॉर मी. दे आर सो प्रीशियस फॉर मी. नोट्स जो है मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओके, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी. रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी. रिटर्न इट टू मी. ओके, प्लीज़ रिटर्न इट टू मी. कृपया करके आप मुझे इसे वापस कर दीजिए. प्लीज़ रिटर्न इट टू मी. आप मुझे वापस कर दीजिए. इफ़ यू हैपन टू फाइंड इट. अगर संयोगवश आपको मिलता है तो कृपया करके मुझे आप इसे वापस कर दीजिए. द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड ए जेल पेन. द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड अ जेल पेन. जो फाइंडर है उसे सुटेबली उपयुक्त रूप से जो है एक जेल पेन रिवॉर्ड दिया जाएगा. इज दैट क्लियर? सो इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव लॉस्ट माई नोट्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर समवेयर इन आवर स्कूल ऑन December 20 cross. Okay, they were kept in printed folders. They are so precious for me. Okay, and please return it to me if you happen to find it. कृपया करके इसे मुझे आप वापस कर दीजिएगा संयोगवश आपको मिलता है. द फाइंडर मीन टू से जिसको मिलेगा, जिसको नोट्स मिलेंगे, द फाइंडर मिलने वाले को द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड. जो फाइंडर है उसे सुटेबली उपयुक्त रूप से जो है रिवॉर्ड किया जाएगा. जर्नल लाइन्स there are basically property loss issues. Okay, just mention these basic lines and notice you will get the full marks. Basically this question is of 4 marks in board examination, is of 4 marks. 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही. ओके, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स में करना पड़ता है. एग्जैक्ट 50 वर्ड्स ही हो ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड राइट योर आंसर इन 50 वर्ड्स. ओके, एग्जैक्टली 50 वर्ड्स होना चाहिए. Okay, there are nearly 50 words. It may be 48, 47, 52, 52, 53 approximately आसपास होना चाहिए. Exact हो तो अच्छी बात है और ना हो तो nearly उसके आसपास होना ही चाहिए. Okay, it's all about your question number 5, property loss. You lost your chemistry notes of chemistry lectures. So let's do the question number 6 now. So students, so let's have a question number 6 in the same series of notice. Question number 6, let's have a question. Your school is going to celebrate. Your school is going to celebrate. आपका स्कूल जो है सेलिब्रेट करने जा रहा है. 2 plus first form is known as infinitive. It is non-finite verb. Okay. The school is going to celebrate. Your school is going to celebrate गांधी जयंती. कि आपका स्कूल जो है गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है. Don't forget that the same kind of question I have given to you in your assignment. And that was Independence Day celebration. Okay, I told you to write the same question in your own way. So let's have the answer of the
the same kind of question right now. Okay, your school is going to celebrate गांधी जयंती. आपका स्कूल जो है गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है. आपका स्कूल जो है गांधी जयंती, गांधी जो जयंती है, गांधी का जन्म दिवस जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है ऑन 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के प्रेसिडेंट होने के नाते, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के प्रेसिडेंट होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट करो इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड्स में, इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड्स में, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देयर नेम्स फॉर द इवेंट. स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देयर नेम्स फॉर द इवेंट. स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए और उनके नाम जो है इवेंट्स के लिए मांगते हुए, कंपटीशन के लिए मांगते हुए आपको 50 वर्ड्स में नोटिस ड्राफ्ट करना है, नोटिस राइट करना है, लिखना. ओके, द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड एंड गिवन टू यू इन योर असाइनमेंट एंड दैट वाज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. स्वतंत्रता दिवस समारोह के ऊपर दिया था. मैंने कहा था कि आपको इस तरह से करना है. हिंट्स भी मैंने आपको दिए थे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली वर नॉट एबल टू राइट द राइट आंसर. सो लेट्स से द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट लाइक गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे, Republic Day celebration, okay, these kind of Christmas Day celebration, if the competitions are basically, you know, are given in these competitions, then your answer will be based on like these lines. Okay, so let's have the first line will be out. The question is about Gandhi Jayanti celebration. गांधी जयंती का सेलिब्रेशन है, गांधी जयंती का उत्सव मनाया जाएगा आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में. तो लाइन नंबर फर्स्ट लाइक आई मेंशन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. गवर्नमेंट ये कोई इन एब्रीविएशन फॉर्म, GOVT, गवर्नमेंट एब्रीविएशन है यहाँ पर गवर्नमेंट का. ओके, इट्स अ गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट. हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, इट्स नॉट गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट सीनियर, इट्स अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज नॉट गवर्नमेंट, इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर. क्या है? वैशाली नगर. नेम ऑफ द स्कूल, इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ इट इज नॉट देन यू कैन मेंशन एज योर ओन पे. मैं हमेशा बोलता हूँ सभी का क्वेश्चन में, अगर नोटिस में क्वेश्चन दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ तो अपने हिसाब से किसी भी स्कूल का आप नाम लिख दीजिए. लेकिन नाम ऐसा ना हो कि इतना बड़ा नाम लिखो, यहाँ शुरू करो, यहीं पे चलते जा रहा है. कोई ऐसा नहीं है सरस्वती विद्याश्री वगैरह ऐसा लंबा चौड़ा स्कूल नाम लिखे. तो इस एक अच्छा सा नाम लिखे. जैसे हमारे स्कूल का नाम है एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी, बहुत ही प्यारा सा नाम है. लाइक मेहता पब्लिक स्कूल हमारा स्कूल का नाम है, बहुत ही एक अच्छा नाम है. तो एक शॉर्ट एंड स्विफ्ट नाम लिखे. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, तो मैं क्या हर क्वेश्चन में अलग अलग स्कूल के नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए कि एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम जो है स्पेशल नहीं होगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो. ओके, सो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर. लाइन नंबर फर्स्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर. लाइन नंबर सेकंड, डेट वहाँ पे आ जाएगा. लाइन नंबर सेकंड में क्या आएगा? डेट. डेट जो है कोई भी स्टूडेंट जो इस तरह से नहीं लिखेगा. वी विल डिस्कस अबाउट द डेट आफ्टर दिस. ओके, क्वेश्चन डेट मेंशन करना है. देन नोटिस लाइन नंबर थर्ड. लाइन नंबर फोर्थ में द नेम ऑफ द टाइटल और द इवेंट, एंड द इवेंट इज गांधी जयंती. गांधी जयंती celebration, but don't forget that these three things should be in capital letter. You can mention date in like small letters like September I have mentioned here, but these three things like name of the institution, notice रहेगा because the question is about notice. Okay, then name of the title. Okay, यहाँ पे title आ जाएगा, उतना इसका नाम है, event का नाम आ जाएगा. Okay, the line number first says before all the students are it is informed to like that. All the students are hereby informed. लगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर hereby इसके द्वारा, hereby इसके द्वारा, hereby. अगर इसे आप अलग अलग करते हैं तो गलत है. hereby ये सही है आपका, ठीक है ना, ये करेक्ट होगा. hereby आपको hereby अलग नहीं करना है, यहाँ पे hereby एक साथ करना पड़ेगा. इसलिए इज अ वर्ड. All the students are hereby informed that our school is going to. Okay, is going to. Actually, the given example is a present continuous tense. Our school will organize. Our school will celebrate. ऐसे मत करना कभी भी. If the program is fixed and near future, then you should use present continuous tense. The same
a rule is also used in present indefinite tense, but actually it's depend upon the knowledge of English language or experience where to be use the rule of present indefinite one with fixed program in near future, and where to be use basically the rule of fixed program in near future of present continuous tense कि हमारा विद्यालय जो है बनाने जा रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में फ्यूचर के एक्शन कभी आते हैं क्या? लाइक 2 अक्टूबर तो बहुत दूर है अभी, राइट नाउ इज 20 सितंबर, भाई हमें हमारे लिए 20 सितंबर है ना अभी तो नोटिस के हिसाब से तो अभी 2 अक्टूबर बहुत दूर है, फ्यूचर में है, तो हम लोग यहाँ पे इज गोइंग कैसे कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ फिक्स प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर। इफ देयर इज फिक्स प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर देन वी के हमारा विद्यालय जो है 2 अक्टूबर को मनाने जा रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिक्स प्रोग्राम इन नियर फ्यूचर। ओके, all the students are hereby informed that our school is going to, okay, it is present continuous but fixed program in near future 2nd of October. Our school is going to celebrate Gandhi Jayanti on October 2nd, 20 cross cross. I have mentioned 20 cross cross because 2020 2021 will be based on your session. आपका सेशन कौन सा उसके हिसाब से 20 क्रॉस क्रॉस इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम, हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में बनाने जा रहा है। किसी बच्चों को लगे हमारे स्कूल में तो ऑडिटोरियम है ही नहीं, तो किसी के दिमाग में अगर ऑडिटोरियम नहीं आता है तो यू कैन मेंशन इन आवर स्कूल कैंपस, ओके, इन आवर प्लेग्राउंड, यू कैन मेंशन एनीथिंग एल्स, ओके, द वर्ड शुड बी एप्रोप्रिएट। ओके, तो हमारा विद्यालय जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम में। दोज इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो विश टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करने के लिए विश रखते हैं, जिनकी इच्छा है, दोज इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वो विश टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करने के लिए विश रखते हैं, टू participate, okay, like to celebrate, 2 plus first form, it is known as infinitive, okay, and infinitive is a non-finite verb. Non-finite verb basically are those verbs that do not change its form as per the subject and tense of a sentence, जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज ना करे, आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो जिरंड है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स है, बहुत सी बातें हैं ग्रामर में पढ़ने के लिए, बट लेट्स फिनिश योर सिलेबस फर्स्ट, पहले सिलेबस फिनिश करेंगे। ओके, तो ग्रामर भी चल रहा है साथ साथ। दोज इंटरेस्टेड स्टूडेंट विश टू पार्टिसिपेट, ऐसे इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, अपना नाम जरूर दें। शुड यहाँ पर यूज हुआ है, अपना नाम जरूर देना चाहिए, ऐसा नहीं है, अपना नाम जरूर दें मीन टू से यहाँ पे एडवाइस है, एंड द मॉडल शुड विच इज अ हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो यूज्ड फॉर एडवाइस। ओके, तो शुड गिव देयर नेम्स, अपना नाम जरूर दें फॉर द कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, कल्चर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए, लाइक स्पीच, प्लेज। आई हैव टोल्ड यू दैट, मैंने असाइनमेंट में बताया था आप सभी को कि इवेंट्स आपको मेंशन करने हैं। ओके, स्पीच, प्लेज, मोनो एक्टिंग, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, ग्रुप एंड सोलो डांस, ये सब इवेंट्स के नाम हैं जो इस कॉम्पिटिशन में होंगे। ओके, लाइक स्पीच, प्लेज, इनके लिए नाम देने हैं आपको, अवश्य देने हैं, शुड गिव देयर नेम्स, स्पीच, प्लेज, मोनो एक्टिंग, पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाने, ग्रुप एंड सोलो डांस एटसेट्रा, आदि आदि, एक्सेट्रा, आप इसे बोलते हो एक्सेट्रा। Okay, you pronounce the given like a bunch of words, a bunch of letters, etc. It's not etc. It is etc. It is etc. Etc. Okay. Group and solo dance etc. by 2 p.m. 2 बजे तक दें, 2 बजे तक दें. Latest before September 28, 20 gross cross September 28, 28 सितंबर से पहले, 28 सितंबर से पहले 2 बजे तक अपना नाम जरूर दें। अट्रैक्टिव प्राइजेस विल बी गिवन टू द विनर्स, विनर्स को जो अट्रैक्टिव प्राइजेस दिए जाएंगे, विनर्स को जो क्या दिए जाएंगे, अट्रैक्टिव प्राइज दिए जाएंगे। अट्रैक्टिव प्राइजेस विल बी गिवन टू द विनर्स। देयर विल बी एन अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, कि वहाँ पर कंपटीशन में, सेलिब्रेशन में स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट होगा, किसका, रिफ्रेशमेंट का। वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए जो है क्या होगा, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट होगा। You may contact to the president of cultural activity from 9 a.m. to 11 a.m. आप 9 a.m. से लेकर 11 you can contact the president of cultural activity. You can easily contact to the president of cultural activity from 9 a.m. to 11 a.m. Okay? 9 से लेके 11 बजे के बीच में आप कल्चरल एक्टिविटी के प्रेसिडेंट से जो है आप संपर्क कर सकते हैं। You can write a like for further details. You may contact for more information. For further information, you may contact. तो जो आपको ठीक लगे लिखें. The lines are for further details. You may contact for more information. For further information, or you can easily write down by removing these lines. Like you may contact if your words exceeding more than 50 words. Like मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ 50 प्लस हो रहा है, तो मैंने for further information काट दिया,
डिलीट कर दिया वहाँ से। एंड आई मेंशन यू मेक कॉन्टैक्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटी फ्रॉम 9 AM to 11 AM। 9 से लेकर 11 के बीच में आप कल्चरल एक्टिविटी के प्रेसिडेंट से आप संपर्क कर सकते हैं। It's all about your Gandhi Jayanti celebration, I believe. It's enough for today. So we'll have the next question, question number 7 in our next class. Thank you, students.